अच्छा, पिछले वीडियो में हम thoroughly डिस्कस कर चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चीज़ है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एप्लीकेशन भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस को स्टार्ट करेंगे कि हम इसके सॉल्यूशन को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस बुक में 10th बुक में हमारे पास टोटल 3 मेथड्स दिए गए हैं कि 3 मेथड्स के थ्रू हम इसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक चौथा मेथड है जो कि रिसर्च बेस्ड मेथड है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे एक और वीडियो में। और तो चले देखते हैं वन बाय वन हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, सॉल्यूशन क्या चीज़ है? सबसे पहले सॉल्यूशन का मतलब क्या है? तो solution is basically those values which satisfy the current equation। किसी भी इक्वेशन को कोई भी वैल्यू अगर सेटिस्फाई कर सके तो उस वैल्यू को उस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट हम कहेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव एन इक्वेशन x square plus x is equal to 0, लेट दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम यहाँ पे x की जगह कौन सी वैल्यू प्लेस करें कि सॉल्यूशन सेटिस्फाई करें, मतलब कि दोनों साइड इक्वेशन के बराबर आ जाएं। तो इसके लिए अगर हम फॉर एग्जांपल x की जगह -1 पुट करते हैं तो -1 स्क्वायर वी विल गेट 1 प्लस -1 is equal to 0. So 1 minus 1 is equal to 0. So both sides of this equation is equal to 0. They are equated now. So this is the solution set of this equation. अच्छा, solution set को हम 0 का नाम भी दे सकते हैं because both side of the equation become 0 because of the solution, because of this value. So this value is now called as 0 of this specific equation. Similarly, अगर कोई दूसरे वैल्यू पे ये सेटिस्फाई कर जाए तो उस वैल्यू को भी हम सॉल्यूशन सेट का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल, द सेकंड वैल्यू विल बी, अगर हम x की जगह 0 पुट कर लें, सो 0 स्क्वायर 0 प्लस 0 we get 0. So the other solution of this equation is 0. Acha, this is the first point. Secondly, a quadratic equation always have two solutions. Two solutions are solutions को मैं zeros भी कह सकता हूँ. So it has two zeros. अच्छा, सॉल्यूशंस को आप रूट्स का नाम भी देते हैं। सो इट द थर्ड नेम इज रूट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट के सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्यूशन को हम और ना किन किन नामों से पुकार सकते हैं। सो सॉल्यूशन में बी कॉल्ड एज 0, इट में बी कॉल्ड एज अ रूट, और इट हैज़ टू सॉल्यूशन, सो इसको हम रूट्स का नाम देते हैं। अच्छा, फैक्टराइजेशन एक ऐसा मेथड है जो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस को हम इसके थ्रू मालूम कर सकते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या करना है कि एक एग्ज़ाम्पल हम लेंगे, उस एग्ज़ाम्पल को हम सॉल्व करेंगे तो द फैक्टराइजेशन मेथड विल बी क्लियर्ड। सो लेट्स टेक एन एग्ज़ाम्पल, 3x स्क्वायर प्लस 7x plus 4 is equal to 0. This equation is a quadratic equation because we have the degree of this equation is equal to 2. अच्छा, steps of this method are, हमने करना क्या है कि this coefficient is basically in the general form of quadratic equation x square plus bx plus c is equal to 0. So this is a, this is c and this is b. हमने करना क्या है कि coefficient of x square एंड द कांस्टेंट टर्म, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है।
कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म, इसको मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म के साथ। दिस इज फर्स्ट स्टेप। इनके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास एक वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को हमने नोट करना है। इस स्टेप को अप्लाई करते हैं। सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 वी गेट 12. So the value is 12, and this we get this value by multiplying the coefficient of x square with the constant. Now in the second step हमने दो ऐसे फैक्टर्स मालूम करने हैं इस वैल्यू की। फाइंड फैक्टर्स of the value which is now 12 such that their addition results in the middle, the coefficient of x. हमने इस वैल्यू के फैक्टर्स मालूम करने हैं और उन फैक्टर्स में हमने वो वाला फैक्टर लिखना है जिसके जमा करने से हमारा रिजल्ट कोफिशिएंट ऑफ x आ जाए, विच इज दैट इज इन दिस केस 7. अच्छा, इन दो को मल्टीप्लाई करना है, फिर हमारे पास एक वैल्यू आएगी। उस वैल्यू के हमने फैक्टर्स मालूम करने हैं और उन फैक्टर्स में से वो वाला फैक्टर उठाना है जिसके एडिशन से हमारे पास ये वैल्यू आ जाए, दी कोफिशिएंट ऑफ x, या लीनियर टर्म जो है उसका कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास आ जाए। तो अब 12 के फैक्टर्स हैं, 12 क्या फैक्टर्स हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज इक्वल टू 12. सेकेंड, 12 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 12. दिस इज द सेम फैक्टर. सो द सेकेंड वन इज 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 वी गेट 12. सो 6 and 2 are also the factors of 12. Factors of 12 are 4 multiplied by 3 we get 12. So out of this, which two factors if added results in this value, we will get those factors. So here we have 1 plus 12 we get 13. So this is not the factor we are looking for. Now 6 plus 2 we get, add, again this is not a factor we are looking for. Now if we add these two factors we get 7. So these are the factors which we are looking for, which results in this in the value, the coefficient of the middle term or the linear term. So now in the third step, replace the coefficient of x with the pair factors. This is now a pair factor, so we will replace this 7 by this 2, because if we add this we will get the same result 7. So we have 3x square in this equation, plus the 7 is replaced by 3 plus 4, and here we have x. This 7 is replaced by 3 plus 4, the pair factor, plus 4 is equal to 0. Now
we get plus 3 into x 3x, 4 into x 4x plus 4 is equal to 0. In the next step, we get this by multiplying this x with 3 and 4, so we get this. Now we will take the common out of this equation, so we have 3 and x is common in this pair and 4 is common in this pair, so we will take this out. So 3 into x, we get x here plus this 3x is the common term, so we get x plus 1. Similarly 4 is common, we take it out, we get x plus 1 is equal to 0. Now in this expression we have x plus 1 a common term and 3x plus 4 is the remaining two terms. We get equal to 0. Now we have 3x square plus bx plus 7x plus 4 is equal to 0. This is factorized to x plus 1 into 3x plus 4 is equal to 0. If we multiply these two factors of this, we will get the same result. Now the solution, now we are going to find the solution of the factor equation of this quadratic equation. For this we will equate both the terms equal to 0. X plus 1 equal to 0, we will get x is equal to minus 1. So by adding minus 1 to both sides, this plus 1 will be cancelled out with minus 1 and 0 minus 1 we will get minus 1. Similarly 3x plus 4 will be equated to 0 and we will get 3x is equal to minus 4. Dividing both sides by 3, we get 3. X is equal to minus 4 by 3. So the solution set of the given quadratic equation is minus 1 minus 4 by 3. So we solved this quadratic equation using factorization method and we have found two solutions for the given equation, which is minus 1 and minus 4 by 3. This solution basically mean that if you put the values, these values minus 1 and minus 4 by 3 in this equation, both sides of the equation will become 0. So this is the solution set, and these two values can also be called as zeros or roots of the given quadratic equation. Thank you.